I'm going through stuff, I'm meeting a lot of people who are coming in the building. In fact, in one of the flats on the 12th floor, वो लोग ऑर्डर पे खाना बनाते हैं. ऑर्डर पे चक्री, ऑर्डर पे नमकीन, ऑर्डर पे लड्डू, ये सब बनाते हैं. तो अगर आप ऑर्डर पे घर के अंदर नमकीन, चक्री, लड्डू बना रहे हो, दैट इज़ बिजनेस. आप घर से आई क्लाउड किचन रन कर रहे हो. ये अलग बात है कि आप ऑब्वियसली चुपचाप कर रहे हो विदाउट एनी सो कॉल्ड वीडियोज़. मगर पायल रोहतगी, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड अ सोशल मीडिया पर्सन, वो वीडियोज़ के ऊपर अपने वर्क के बारे में अपडेट करती है. तो कोविड के बाद when housewives are working from home, even the men were working from home, but housewives are working from home through iCloud Kitchen. तो आप नहीं कह सकते कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है. ठीक है, बिकॉज आप घर पे बैठ के लड्डू का ऑर्डर, चिवड़ा का ऑर्डर, चक्री का ऑर्डर आप ले रहे हो. दिवाली टाइम पे ऑर्डर्स तो आएंगे ना, बिकॉज आप काम कर रहे हो. सो दैट इज फूड बिजनेस एंड दैट इज फूड बिजनेस फ्रॉम होम. सिमिलरली इट इज पायल्स फूड बिजनेस फ्रॉम होम. ये दूसरी बात है कि पायल के पास टेरेस है, पायल के पास स्पेस है. तो जब पायल के पास स्पेस है तो पायल ने सोचा व्हाई नॉट यूज दिस स्पेस, बिकॉज पायल को ये फ्लैट में रहना पसंद नहीं है. पायल को ये फ्लैट बहुत छोटा लगता है. तो पायल चाहती है कि पायल एक बड़े फ्लैट में मूव कर जाए और इस फ्लैट को हम यूज़ करें. बिकॉज वैसे भी इस फ्लैट का ओसी तो है नहीं अभी तक, बिकॉज नीचे बेसमेंट में चॉल है. तो जब ऐसी सिचुएशन है तो फ्लैट को यूज़ करना है, बिकॉज कहाँ आपको बॉम्बे में टेरेस मिलेगा. सो इट्स अ थॉट प्रोसेस. तो जब ये थॉट प्रोसेस लोग समझ जाएंगे तो लोग एक दूसरे को अटैक करना बंद करें. कॉन्क्रीट टॉक्स करेंगे जहां पे आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो rather देन पुल ईच अदर डाउन. अपनी लकीर लंबी करो, दूसरों की लकीर छोटी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला. समझदार को इशारा काफी है. Now got to get back to work. Got to get back. Bye. So there are various items that I'm discussing with my mother, and my mother is talking to the various cooks in Ahmedabad. The cooks in Ahmedabad are mostly Gujarati cooks, and obviously Gujarati cooks have a different way of cooking everything. Gujarati roti बहुत soft होती है, बहुत मुलायम होती है. अब healthy hustle is not opened in Gujarat yet, in Ahmedabad yet, but let's see. भगवान चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है. सो हेल्दी हसल की जो अभी दिवाली स्पेशल कुकिंग है वो होने वाली है अहमदाबाद से. एंड माई मदर इज़ गोइंग टू ट्राई हर गुजराती कुक्स आउट देयर एंड सेंड मी स्टफ विच आई शैल बी सेलिंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. बिकॉज बॉम्बे में आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क विद सम न्यू कुक दैट आई हायर टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, बिकॉज इट विल बी ऑल न्यू एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट होल रगमरोल. आप किसी को ट्राई करो, वो आपका आटा, दाल, चावल, तेल खराब करे, because you don't know the experience of that person. All these people are coming via. So I don't want to take the risk with a cook in Mumbai for the Diwali selling on the online delivery platforms. और stall तो अभी तक चालू नहीं हुआ because I haven't still got a good person. And I am not interested in going on the roads and figuring out किसको काम करना है, किसको काम नहीं करना. जिसको काम करना है वो अपने आप काम करने के लिए आए, because I am paying them and I am a good employer. मैं एक एम्प्लॉई के झगड़े में पड़ती हूँ और मुझे झाड़ू पड़ता है या मुझे मार पड़ती है for no fault of mine. So anyways, let's forget that incident. It's not even worth discussing. So the whole thing is, so Diwali food items are going to be specially made from Gujarat by Gujarati cooks and going to be sold on Zomato and Swiggy's platform. Yeah, that's the zone. Good morning. Okay, along with my food business, I'm reading news on Israel and Palestine and the whole bombing that's happening on the Gaza Strip. I just want to say this much, that bombing civilians who were enjoying a rave party in Israel was wrong. Civilians have got nothing to do with people who are fighting a narrative and who have signed up to be soldiers for their respective narrative. Civilians who are just dancing, getting drunk at a rave party were not supposed to be attacked by Hamas. Now, in retaliation, Israel has obviously attacked. एंड दोनों साइड से बहुत स्टोरीज़ हैं जो मैं सुन रही हूँ. हामस के वीडियोस भी मैंने देखे, बट इज़राइल का जो भी हिस्ट्री है, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल
his way of saying that we are going to be finishing this war must be having some kind of history attached to it. I would just request civilians on both the sides to get away from the war zone, leave areas where you think attacks are going to happen by either Hamas or the Israeli forces. Keep yourself safe, keep your family safe. You have not signed up for the war because you have your family and children, so try to keep them safe. Evict the areas. That's what I would tell all the civilians of Israel and Palestine. Yeah, that's my sincere advice. Because जब कश्मीर का भी issue हो रहा था, Article 370 was removed. There were a lot of stories that we heard in media, but we never know if media published correct stories or fake stories. All we know is that this kind of bloodshed did not happen. This kind of war in Kashmir. There was just gunning down of terrorists. So, just like we have sentiments for our country, people in Israel have sentiments for their country, and Palestine history is something that I don't know much about. So when I don't know something about any history, I should not comment on it. All I want to say is that civilians, both the sides, need to evict from war zones.